Hi everyone, Benazir here. Today we are making a woolen bangle hanging. For making this woolen bangle hanging, it requires unused bangles and woolen. I have taken thin bangles. If you want, you can take a thick bangle. As I have taken a thin bangle, I am using two bangles to make it look little thick and strong. I am rotating the woolen around it. I also thought of talking in Hindi in this video, so I might use Hindi words. Hope you all will like it. We need to wrap the bangle with the woolen, so I am rotating the woolen around the bangle, and make sure you are not leaving a space between one thread to another. हमें एक धागे और दूसरे धागे के बीच में कोई जगह नहीं छोड़नी है. हमें अच्छे से उसे लपेटना है और इस तरीके से लपेटना है कि ना चूड़ी पे ज़्यादा ज़ोर आए और ना ही आपका डिज़ाइन ख़राब हो. Once when you are done rotating it, when you reach to the first end, tie a knot on it, and you have to tie at least 2 to 3 knots so that your bangle thread will not come out when you are attaching with the other bangles. आप जब लास्ट तक आ जाएं तो वहाँ पे आपको गांठ मारनी है. 3 से 4 गांठ मारिए और बचे हुए तागे को कट कर दीजिएगा. Like this only you have to make at least 12 bangles of one color and 12 bangles of another color. एक डजन एक रंग का, दूसरा डजन दूसरे रंग का बैंगल का आपको सेट बनाना है. ऐसे ही कर कर उसे आपस में जोड़ना है. कैसे जोड़ना है वो मैं आपको दिखाऊंगी. Once you are done making all 24 bangles, you have to set them up. You have to give the shape which you want to, and then start applying a glue. I have also made this pompons at the end, which I have not shown in the video, but if you want me to show how to make this kind of pompons, I'll make another video on it. Apply a glue in between bangles as shown in the video. You have to make a set. जब आप को उस आकार में आ जाए तो वहाँ पे आपको गम लगा देना है और उसे अच्छे से एक दूसरे में जोड़ देना है. जब आप जोड़ दें तो आपका ये स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा. I have not recorded the entire thing of applying a glue on it. I've just shown you the little bit how to add it, and I've also added the pom-pom with the beads. If you want me to show how to make the kind of a leaf which I have made it in the end, I'll make another video on it. अब हमारा वुलन बैंगल हैंगिंग तैयार है और आपको मेरा सारा हिंदी में एक वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन. थैंक यू.